Okay. Good morning, everyone. How are you all? Perfect. Shall we start? So, yesterday we completed our very first chapter. What was the name of the chapter? Nature and scope and objectives of an auditing, where we learned everything about objectives, scope, and everything, right? But I would like to tell you some 2-3 points extra, 2-3 topics extra, because we have talked about them in the particular chapter, right? Even though they are going to come at the later stage, but I would like to explain it here. One is called Essay 210, and one is a closing note of Essay 200, which we started it, right? So I think the last topic which I made you write before making you write assurance and engagement was scope. Scope के बाद क्या क्या लिखा था मेरे को बताना एक बार. What we wrote after scope? Please tell me. Advantages what? Aspects to be covered in audit. उसके बाद then we have written the differences. That's it ना. We have not written basic principles governing an audit करके topic. We have written or not written? Not written. So today we are going to understand that topic, and after that we will understand essay 210. Then we will shift to our chapter number 2. So these are the 2 extra topics I need to tell you, right? So what is the name of the topic? The name of the topic is, put the heading, basic principles governing an audit. Threats, so I made you write threats. Sare threats, all the 5, including the safeguards. So the name of the topic is basic principles governing an audit. Basic principles governing an audit. Basic principles governing an audit. ठीक है? अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे टॉपिक. There are total 9 principles here. Total how many principles? 9. Out of 9 principles, most of the principles you are already aware of, because we have invested a lot of time in understanding the qualities of an auditor. If you remember, we have divided our qualities of an auditor into 2 parts. What are the 2 parts? Personal and professional qualities. Am I correct? Tell me what we wrote in personal qualities. Integrity. Yes. So our first basic principle is nothing but called IOI. What is IOI? Stands for integrity, objectivity, and independence. I will not repeat those principles which you have already done. Just will do the quick revision and move to the main principle. Can you please tell me what is the meaning of the word called integrity? You should be honest, you should be sincere, and you should be what? Straightforward. That is what we learned. Am I correct? That is what we mean by the term called what? Integrity. Am I correct? Then what do you mean by objectivity? Having an impartial or unbiased attitude. Only in the beginning of the audit or throughout the audit? So we should not be partial, we should not be what? Biased. We should carry the impartial and unbiased attitude throughout the audit. What is I stands for? Last one. Independence का मतलब क्या होता है? No family relationship, no financial relationship with your client. You should remain independent through mind and independence through appearance. Are you getting the point? Never get influenced by the wishes and directions of others. That is what you mean by the term called independent. Did we all do that? Amma, please switch off the fan, please. Ye wala. First one. Thank you. So it's creating a lot of noise actually. So independence you understood. So what is the first one? Integrity, objectivity, independence. So first principle we already did that. What is the second principle? If you remember, after that we wrote this point. याद आ रहा है ये word? तो इसे बोलते हैं principle of confidentiality. What do we call it as? Principle of confidentiality. Can somebody please tell me what is the principle of confidentiality? You are not supposed to leak the confidential and sensitive information of your client to any outsider. To any whom? Outsider. Unless who permits? Client permits, or there is a requirement of law. If you remember, we already discussed one question also, how this question can be planted in the form of question. Like I told you the example of leather industry wala example tha, कि you were appointed as a chief guest and 5 years back you retired from your practice, but unfortunately while speaking up, you unknowingly told some secretive information of your client whom you have served 7-8 years back. But you are a present auditor or past auditor? Does that matter or does not matter?
थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे. दैट टाइम इट वाज अ क्वालिटी ओरिएंटेड टॉपिक, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू द लिमिटेड वर्जन. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक लिटिल बिट एक्सटेंसिवली. ठीक है. नाउ द टॉपिक नेम इज नोन एज व्हाट? कॉन्फिडेंशियल. देखो, जब आप सीए फाइनल में व्हेन यू विल एंटर ना, यू विल गेट वन टॉपिक कॉल्ड नोक्लार. देयर इज वन टॉपिक यू विल अंडरस्टैंड. द नेम ऑफ द टॉपिक, डोंट राइट एनीथिंग, आई विल मेक यू राइट प्रॉपर्ली. The name of the topic is known as NOCLAR. NOCLAR का मतलब होता है non compliances of laws and regulations. What is the full form? NO stands for non compliances of laws and regulation. Whenever the company will break some laws and what? Regulations, then in some circumstances में you are allowed to break your confidentiality without even taking the permission of the client. मतलब मैं आपको एक्सेप्शंस बता रहा हूं अंडर विच यू कैन स्पीक अप. अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल लेते हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग की. व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्जांपल? अच्छा, टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होती है? जैसे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ब्लैक मनी, राइट और नो? क्या होता है ब्लैक मनी? काला पैसा. पेंटेड होता है. काला पैसा मतलब क्या हुआ? ब्लैक मनी मतलब क्या? विच इज एक्सप्लेन्ड इनकम और अनएक्सप्लेन्ड via banking channel or cash, unaccounted or accounted, unaccounted, right or not? ये वो वाला पैसा होता है which you can't disclose to anybody that you have because that is being earned from the criminal sources. Which sources? अब प्रॉब्लम क्या होती है कि suppose if I'll come to know about that thing that my client is doing this thing, my client is generating some criminal proceeds, he is making some criminal money and he is using that money for what purpose? Terrorist financing. अब मेरे को बताओ, should I keep my mouth shut? Is it a question of now tax evasion or is it a question of public health and safety? अब समझ में आ रहा है? इस केस में you don't have to take the permission, you can immediately go and make the complaint to the regulatory authorities. आप सीधा जाके ईडी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट डिपार्टमेंट, दे विल रेड, दे विल सीज द मनी so that we can prevent India from being terrorist attacks or something, because something which is not accounted can be used for the which financing? Terrorist financing. उसे हम लोग बोलते हैं NOCLAR point number 1. Are you getting the point? तो in this case do you have to take the permission of the client? तो मुझे लगता है क्लाइंट परमिट करेगा. क्या बोलोगे क्लाइंट को? सर आपके अकाउंट में 500 करोड़ है, आई थिंक यू आर फाइनेंसिंग ओसामा बिन लादेन, can I please go and tell to the police or not? Do you think that he will say, हाँ okay Rohit, no problem? He will say or he will not say like that? So these are the various circumstances under which you can break your what? Silence. Am I correct? फिर second आती है वही मैंने बोला public health and safety. अब let's say for example आप डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के ऑडिटर हो, उसका आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑडिट कर रहे थे, यू वर अ कॉस्ट ऑडिटर, यू वर डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ऑडिट, यू केम टू नो दैट कि ही इज यूजिंग सम केमिकल इन द मेडिसिन व्हिच इज नॉट गुड एंड इट कैन मेक यू डाई इन द कमिंग फ्यू इयर्स ओनली, but they are not realizing the fact and there was a lab report for that, but they are not disclosing it to their customers. Now please tell me again, is it a kind of confidential information which you should keep secret or you should disclose it to the outside world? तो कई ऐसे केसेस होते हैं where you can't keep your confidentiality. You have to speak up in those cases. Those cases are known as NOCLAR cases. What do we call them as? What do you mean by NOCLAR full form? Non-compliances of laws, and in such situations you need not fight with your confidentiality principle, simply speak up. फिर इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल लाइक मनी लॉन्ड्रिंग इज वन एग्जांपल. जैसे मैंने आपको बताया मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी. फिर एग्जांपल ड्रग्स ट्रैफिकिंग. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Suppose you came to know that your client is involved into the manufacturing of what? Drugs. Or it can be terrorist financing. It can be insider trading in the stock market. All these are the areas where you need to speak up. At that point of time, you can't take the shelter under the head called what? क्योंकि अगर ईडी या सेबी को पता चल गया कि you are helping your client in what? Maintaining this secrecy, so your caller also will be caught and you will be also sent to the what? Jail. Are you getting the point? So do not help your client in hiding those things which are bringing the question mark on the public health and safety. यहां तक समझ में आ गया? तो because we are not only ethical, we are also moral in nature. हम लोग immoral नहीं है. We are moral. If things are going out of the control, in such cases we can break our
confidentiality. So there are total 4 cases under which you can break the silence. Total how many cases? अब मैं तुम्हें वो केसेस बताता हूं कि एक्चुअली क्या केसेस है. When case number 1, when you are a party to the case, don't write like this, I will make you write properly. When you are a party to a case, what do you mean by party to a case? अब मान लो क्लाइंट के अगेंस्ट केस हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट sued whom, summoned whom, client, and they also send one summon to your office. They are also sending the police warrant to your office कि boss, you are also connected, you only helped your client, so we are warranting you also, please come and show your presence in the high court or supreme court. अब मेरे को बताओ, is the sword hanging on client's neck or client as well as auditor's neck? Is it still a time to keep your mouth shut or you have to open up? So what is the case number 1 when you have to open up? When you are a party to a case. फिर case number 2, when any inspection and investigation is going on. What are the 2 cases? Inspection and investigation. अब बताओ, is inspection and investigation is a statutory requirement of law? उस केस में someone should keep the mouth shut or you have to open up? Again, अब मेरे को ये बताओ, what are the 2 cases I already told you when you have to not maintain the silence? Either the prior permission of the client, and what was the second one? This is what the question of law, right? Third case, when your ethics are telling you from inside कि you speak up. जैसे मैंने अभी आपको बताया, I came to know about that Dr. Reddy's laboratory is using a chemical which is highly dangerous in nature. Should I keep my mouth shut or should I speak up? So when you are, what is provoking you, what is pushing you? Ethics. So tell me the 3 cases. When you are a party to the case, when there is an inspection and when your ethics are pushing you. 4th case, when on you peer review takes place. What takes place? ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये टॉपिक को हम लोग बोलते हैं ऑडिट ऑफ ऑडिटर्स. व्हाट डू वी कॉल इट एज? अच्छा, हम लोग किसका ऑडिट करते हैं? कंपनीज का, एंटिटीज का. हमारा ऑडिट कौन करता है? आईसीए. कौन ऑडिट करता है? आईसीए में एक बोर्ड है. द नेम ऑफ द बोर्ड इज नोन एज पीयर रिव्यू बोर्ड. मेरे ऊपर 2016 और 2019 में ऑडिट हुआ था. We do not call it audit, we call it review. And what is the name of that review? We call it as peer review. अब मैं तुम्हें इसका लॉजिक बताता हूं, इसे peer review को बोलते हैं. A chartered accountant comes to a chartered accountant's office and sees that what a chartered accountant is doing. Repeat. Comes to a chartered accountant's office and checks that what a chartered accountant is doing. मतलब ICA is sending a practicing CA to a practicing CA's office to check that ki whether that practicing CA who is practicing is doing his practice properly or not. Understood or not? समझ में आ गया? उसे हम लोग बोलते हैं peer review. अब मैं तुम्हें बताता हूं peer का grammatical meaning क्या होता है? Same designation. Which designation? It means are they going to send anybody else from another profession or the same CA? The person who is going to come and do the audit of you is also a CA. क्योंकि only a CA can understand whether the another CA is doing the work properly or not, because both have the knowledge of standards. तो वो आके अपने ऑफिस में चेक क्या करेगा? वो मेरे ऑफिस में आके मेरे डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा. क्या चेक करेगा? What do you mean by documentation? Those evidences, those planning, those programs which I have made while doing the whose audit? Client's audit. So basically he's checking work. Did you do the audit properly or not? What is he checking? कि did you do the audit properly or not? और ये हमारी रिपोर्ट किसको करेगा? Peer review board. This will report it to whom? ICA. और हमारी रिपोर्ट भी 2 तरह की होगी, पॉजिटिव रिपोर्ट और नेगेटिव. If I get a positive report, then I will get a certificate. उसे बोलते हैं peer review certificate. What do we call it as? And you have to hang it on the wall of the company so that people can understand कि boss, your quality is supreme. But if there is a negative report on you, it means they didn't like your documentation, they didn't like your practicing provisions, all those things they didn't like, then they will not issue you the certificate. Not issuing the certificate itself means what? Positive remark or negative? So remember, your membership number and COP will be cancelled permanently. तो तुम्हें क्या लगा था? ICA का लोगो क्या बताना मेरे को? Always keeping the eagle eye on you. Who? ICA. So even after getting qualified also you are not a free bird. आपको हर साल 30 सितंबर में
Every year on or before 30th September, you have to tell to the ICAI what you are doing throughout the year. Each and every inch of detail should go into the records of whom? ICAI. And ICAI ये randomly pick करता है. Like India में total more than I think 30,000 to 40,000 forms होंगी. तो ICAI randomly picks those forms and conduct a what? Peer review. What do we call it as? अब मेरे को ये बताओ, who is asking you the questions? ICAI is asking you the question. अब now please tell me, is it again a requirement of law? Yes, you have to speak up. So what are the 4 circumstances under which you can break your confidentiality? When you are a party to a case, inspection and investigation, your ethics are providing you, and last one, ये cases में you don't have to maintain your principle called what? Confidentiality, you can speak up. और एक one more point. अच्छा, confidentiality means what? You know the secretive information of your client. Am I correct? Should you misuse it? क्या आप उससे अपने client को blackmail कर सकते हो? I know you are not paying the taxes. So can I blackmail you? Allowed or not allowed? That is also unethical. So neither you should misuse it or nor you should speak up unless these 4 situations will come. Or with the prior permission of 5th one is what? Prior permission of the client. So last time push on, tell me the 5 cases under which you can break the confidentiality. Prior permission of the client, when you are party to a, then inspection and investigation, ethics and peer review. Sorted है. So what is our principle number 1 over? Independence, objectivity, integrity. What is principle number 2? Total कितने हैं? 9. Third principle, you already have an idea. It is known as skills and competence. What do we call it as? What do you understand by skills and competence? इसका मतलब क्या होता है? Only doing a chartered accountancy course is enough, or you need to update and upgrade accordingly? As and when the time will pass by, do you have to do the new things in the market? जैसे मैंने तुम्हें बताया था, DISA is one of the course you have to do, forensic audit is the course you have to do, registered valuer, surveyor and loss assessment, so many areas are there under which you should know. और प्रॉब्लम पता क्या होता है? ICAI keeps on changing the portion. अब जैसे 700 सीरीज है स्टैंडर्ड्स की, वो 2018 में फुली चेंज हो गई. In 2008, 700 series was changed. Before 2008, we were reporting in different manner, and after 2018, we are reporting in a different manner. अब मेरे को बताओ, I तो got qualified in 2012, तो I was reporting under the old procedure up to 2018. Since 2018, am I still reporting under old one or new one? It means, do I have to upgrade my skill? Yes. You have to upgrade your what? Competence. बहुत simple sentence बोलूंगा. If you are not updated, you are outdated. What is the sentence? Not updated, you are out. Nobody will buy your services. How you will feel if I'll teach you the November 2023 का portion? Are you updated? That portion has been changed or not? So should I teach you the old one or the new one? Expectations. यही client की expectation होती है. तो right now you are my client or not? You are my customer or not? Same is the case in the practice. Customer क्या expect करता है? अब 2017 में what happened? Sale tax abolished, excise abolished, service tax abolished. What came? GST. So should I be still giving the services of old laws or new laws? Again, the question is what? Skills and competence. That's the reason ICAI has made it mandatory. So many trainings they have made it mandatory for you. They conduct so many what? Seminars, and especially they want you to have CPE hours. If you remember, मैंने बताया था इसके बारे में. CPE क्या होता है? Continuing Professional Education. What is the full form? How many hours? 90 hours you have to spend in how many years? 3 years. तो जैसे मैं 2013 से प्रैक्टिस स्टार्ट करा, 13, 14, 15 का एक, these 3 years में I must have spent what? 90. और ये mandatory है. It's not that you will just like skip it out. No, it is mandatory. Otherwise, your COP and membership number will not be renewed. So 13, 14, 15, then 16, 17, 18, 19, 20, 21, and now 22, 23, and 24. Next year, I have to give my report. In the last 3 years, how many hours I have attended? Which hours? CPE hours. ये basically CPE hours होता क्या है? ICAI conducts a seminar.
whatever the recent developments are coming in our profession, ICAI gives you the knowledge. You just simply have to go to that seminar of half an hour or 45 minutes or 1 hour, go there and give your attendance. And if you want to attend the full seminar, attend the full seminar, because that will decrease your knowledge or increase. That's what ICAI wants. कि आप अपनी knowledge को क्या करो? Enhance करो. You enhance your what? Knowledge. Did you understand the point? That is called skills and competence. Tell me 3 principles now. IOI, confidentiality, skills and competence. तीनों perfectly understood. What is the fourth one? अब यहां से जो principle करेंगे, that you have not heard. Principle number 4 is known as work performed by others. What is the name of the principle? Achha, I think you can give me the answer. Who actually does the audit? Auditor or his team? Yes. हम auditor, when you become a chartered accountant, na, obviously right now तो your articleship has to go through. I think for 2 years you have. So 2 years की articleship में you yourself will realize कि your chartered accountant will not do the audit. He will only be doing DRS. What he will do? DRS. DRS stands for Direction, Review, Supervision. What is DRS full form? वो आपको checklist दे देगा. क्या करेगा? He will give you the checklist and will tell you to go to this client and that client and go and do the verification of this thing. Sales check karo, TDS check karo, this and that, and you like a puppet, you will do the work and bring it back to whom? Auditor. He will review your work and he will supervise you by coming at the regular intervals. He will not be staying with the client's play. Reason being very simple, और इसमें logical भी है. I do not allow auditor to spend more time with the client because there are chances of compromisation. जितना टाइम ऑडिटर स्पेंड करेगा क्लाइंट पे, चांसेस ऑफ फाइनेंशियल एंड फैमिली रिलेशनशिप विल बी हायर और लोअर. इसलिए वी सेंड अवर वर्ड टीम. बट दैट डजंट मीन दैट आई विल नॉट गो. आई विल गो एट रेगुलर इंटरवल्स. जैसे 2-3 डेज में एक बार जाके चेक कर लिया कि वेदर माई स्टाफ इज डूइंग द प्रॉपर वर्क और नॉट. आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट डू वी कॉल इट एज वर्क परफॉर्म बाय अदर्स. ये तो हो गया स्टाफ वाला एग्जांपल. समटाइम्स, अच्छा प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय हेड ऑफिस एंड ब्रांच? Which one is primary? Branches are what? Secondary. Who reports to whom? So if I'm a head office auditor, is there a possibility that branch audits are done by somebody else? But as a head office auditor, am I a secondary auditor or primary auditor? Do I have to report only on head office or whole group? But I too did not do the audit of those 7 branches. Who did the audit? Branch auditors. So who will report to whom? Branch auditors will report to whom? So think from the head office auditor point of view. Am I doing the work or am I using the work? Using the work performed by others. Who are those others? Which auditors? Branch auditors. Which auditors? Branch auditors. अब बताओ, who are the 2 people whose work you use? Staff and branch audit. अच्छा, फिर हमने एक बात करी थी, the concept between internal auditor and external. Who is getting appointed by whom? Internal auditor is appointed by management. External auditor is appointed by sheriff. Internal works for whom? Management. And external works for whom? Who comes at the end of the year? But who is there throughout the year? अब ध्यान से सुनना जो मैं पूछ रहा हूं. Who knows better about the inside and outside of the company? Who knows very less? So who is dependent upon whose work? External auditor. So do we use the work of which auditor? Internal auditor. अब समझ में आया थर्ड एग्जांपल. अब मैंने आपको एक डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी का भी एग्जांपल बताया था. अब डू आई नो द कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल्स और आई डोंट नो? डू आई नीड टू हायर एन एक्सपर्ट? तो कैन आई टेक अ फार्मासिस्ट along with me as a part of my team to go there and check the chemical composition that they are using in manufacturing of medicines or not? So who is giving me the report? A auditor, a chartered accountant, or a pharmacist? Is he an expert in his field? So I am using the work of what? Expert. I am giving you 4 examples. The reason being very simple. You should know that what this principle is trying to tell you. ये principle आपको ये बोल रहा है कि throughout your audit, repeat, auditor is always dependent upon
वर्क्स परफॉर्म बाय staff or branch auditor or internal auditor or expert, but that does not mean that कि they will do expression of opinion. Opinion किसको ड्रॉ करना है? ऑडिटर को. Am I correct? इसका मतलब do I have to keep an eye on them or not? Is the ICAI keeping the eye on me by conducting a which review? Peer review. I will keep the eye on my staff. I'll keep the eye on branch auditor. I'll keep the eye on internal auditor as well as what? Expert. Because if they will do something wrong, boss, I have to take the whole blame. क्योंकि who chose them to do the work? Auditor. So if they are not doing the work properly, if they are negligent, it is whose problem? Auditor's problem. Is it clear or not? This is what this principle is trying to tell you. कि boss, you can't escape from your what? Responsibility of expressing an opinion. मान लो मेरे स्टाफ ने काम गलत किया, तो क्लाइंट मेरे स्टाफ को कुछ नहीं बोलेगा, क्लाइंट सीधा कॉल मेरे को करेगा. और मान लो अगर मैंने ब्रांच ऑडिटर, रॉन्ग ब्रांच ऑडिटर का वर्क यूज कर लिया, तो क्लाइंट फिर से मेरे को ही कॉल करेगा, क्योंकि हु मेड द चॉइस टू यूज हिज वर्क? ऑडिटर. व्हाट? अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय होम? उसको सैलरी कौन दे रहा है? वेयर आर हिज लॉयल्टीज? मैनेजमेंट. कैन ही मैनिपुलेट मी एंड गिव मी द रॉन्ग इंफॉर्मेशन? बट हु टुक द रॉन्ग चॉइस? एक्सटर्नल ऑडिटर. विच ऑडिटर? एक्सपर्ट को किसने अपॉइंट किया? External auditor. Did I hire a wrong expert or not? So everywhere who has to take the blame? External auditor. That is what this principle is saying. So that's why this principle says that always focus on this. What is this? Even though you are going to use the work performed by others, but always direct them, review their work and supervise them. क्योंकि you are the senior. Ultimately signature आपका लगेगा, उनका नहीं लगेगा. They are not the one who are going to sign. You are the one who are going to sign. Are you understanding the intention behind it? Tell me the four principles. IOI. Full integrity, objective. Second one. Third one. Skills and competence. Fourth one. Work performed by us. Fifth one. Audit planning. What is the fifth principle? और ये तो हमने पहले भी पढ़ा था. What do you mean by audit planning? इसका एक लाइन बताया था मैंने आपको. इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल. अब मैं तुम्हें बताता हूं ऑडिट एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है. हाउ वी स्टार्ट द ऑडिट व्हेन वी गेट द ऑडिट फॉर द क्लाइंट फॉर द फर्स्ट टाइम. स्टेप नंबर 1, वी ऑलवेज डू AKOCB फर्स्ट. क्या? एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस. व्हाट इज द फुल फॉर्म? अच्छा मेरे को वाइजेक स्टील प्लांट क्या बिजनेस करता है? वो तो नाम से ही पता चल गया. चलो, SK लिमिटेड क्या बिजनेस करता है? आप बताओ. SK लिमिटेड क्या बिजनेस करता है? एशियन लिमिटेड क्या बिजनेस करता है? एशियन. मैंने पेंट्स बोला. एशियन नाम की एक ही कंपनी है इंडिया में. चलो, RG लिमिटेड क्या करती है? इसका मतलब यू आर ब्लैंक व्हेन यू आर गेटिंग अपॉइंटेड. इसका मतलब बिफोर स्टार्टिंग योर ऑडिट यू हैव टू डू योर होमवर्क. एम आई करेक्ट और नॉट? होमवर्क किसको करना है? ऑडिटर को. उसे हम लोग प्लानिंग बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट एज? प्लानिंग. तो यू हैव टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ हुड्स बिजनेस क्लाइंट. एक सिंपल सेंटेंस में पूछता हूं, माई क्लाइंट इज अ मैन्युफैक्चरर, राइट? शुड आई चेक GST रिटर्न्स और कस्टम रिटर्न्स? मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चरर है, GST रिटर्न. वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करता है, GST एंड कस्टम. तो तुम्हें पहले अपने क्लाइंट का स्कोप, बिजनेस, MOA. क्या होता है MOA? उसमें सबसे मेन क्लॉज क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज. उसमें क्या लिखा होता है? लाइन ऑफ एक्टिविटी, लाइन ऑफ बिजनेस इन विच योर क्लाइंट इज ऑपरेटिंग और नॉट. तो ये नॉलेज कहां से मिलती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, AOA, having discussions with the management. This is called your planning stage. Which stage? Planning stage. इसलिए मैं बोलता हूं, if you fail to plan, you will never be able to complete your audit timely, effectively and efficiently. ये गारंटी है. You can never complete your audit on timely,
effectively and efficiently. Reason? क्योंकि you did not go in a planned manner. क्योंकि याद रखना आपके पास सिर्फ 180 डेज है ऑडिट करने के. हाउ मेनी डेज? सो 180 डेज तो बहुत है, बट फॉर 20 कंपनीज हाउ मेनी? अब डिवाइड करो. 9 डेज में आपको 365 डेज वाली कंपनी को ऑडिट करना है. तो 9 डेज में हाउ डू आपको सैंपल साइज भी प्लानिंग से सिलेक्ट करना पड़ेगा. You have to meet who are the knowledgeable people whom you should talk to, who is going to give you the evidence, which evidence is reliable, which is not. Everything you have to complete it in a lot of time or limited time. That's why going unplanned is the right solution, or planned. That is what you mean by audit planning. चलो मैं एक और एग्जांपल पूछता हूं. Suppose your one client is rice mills. मेरे को चेक कर रहे हो तुम्हारी प्लानिंग क्या बोलती है. योर वन क्लाइंट इज राइस मिल्स हैविंग 6000 बैग्स ऑफ राइस राइट इन हिज गोडाउन, एंड योर वन क्लाइंट इज एबीसी स्टील्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाइंट? हैविंग 70,000 मेट्रिक टन्स ऑफ स्टील इन हिज गोडाउन. आप कहां पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो? वेयर यू कैन गो and do the physical verification. Rice mills में जाके can you count the number of bags? उसमें से randomly 10-20 bags pick करना, weighing machine पे डालना, and you will get to know about the quantity of the stock. Am I correct? अब ये 70,000 metric steels का physical verification क्या करोगे? Do you own a JCB? या अपना हाथ नीचे डालोगे? 65,000 टन है. क्या ये JCB है? तो तुम्हारे पास जेसीबी है या नहीं है? तो तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स है या नहीं है? अब कैसे ऑडिट करोगे बताओ? वहां पे तो आपने इंस्पेक्शन कर लिया, यहां पे इंस्पेक्शन नहीं, यहां पे कौन सी टेक्निक चलेगी? ऑब्जर्वेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक? ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? वहां पे जाके गोडाउन में ऐसे खड़े नहीं होना है. ऑब्जर्वेशन मतलब आस्क देम कि व्हेन यू डू द फिजिकल काउंटिंग, हु विल आस्क? Auditor. देखो, I will not be able to do the physical counting because I don't have JCB, but the company will have or not. I will ask them, what is the day when you do the physical counting? I will come on that day and I will observe your method of doing the physical counting. If I'm okay with your method of doing the physical counting, I'm also okay. अब समझ में आया? तो एक जगह पे कौन सी टेक्निक यूज करी आपने? Inspection. Which technique? Can you go on your own and do the verification? But here inspection or observation? इसे बोलते प्लानिंग करना. और ये कैसे पता चला आपको कि आपको कहां इंस्पेक्शन करना है? Where you have to do the observation? Because you did AKOCB. What is AKOCB? Acquired the knowledge of client's business. అర్థమైందా? So tell me the 5 principles. IOI, confidentiality, skills and competence, work performed by others, audit, planning. Or main 6th principle, we have to collect what? Audit evidence. We have to collect what? Audit. तुम बिलीव नहीं करोगे, अपना पूरा 500 सीरीज जिसमें 11 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, every standard talks about only one word. It means without audit evidence, your audit is null and void. चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं. अब से फॉर एग्जांपल ये मेरा भाई, आप लोकल ही हो, नाम क्या आपका? अब अभिनय, मान लो ये मेरा रिलेटिव है, ठीक है. अब इसके पापा ने मेरे को बोला, अभिनय देखो, अभिनय हैदराबाद आ रहा है क्लास लेने के लिए, तो आप थोड़ा आंख रखना. क्या रखना? आंख. अब मैं क्लासेस में बिजी, बट फॉर्चुनेटली गॉड ऑल्सो वॉन्टेड मी टू कीप एन आई. तो फॉर्चुनेटली आई वॉज पासिंग बाय पिज्जा हट. ये बैठा हुआ था एक लड़की के साथ. किसके साथ? लड़के साथ. भाई मेरे को अभिनय तो पता चल गया, मैंने कहा अभिनय तो पक्का है. लेकिन ये मतलब मैंने ना इसके पापा को कॉल किया, मैंने कहा देख लो भाई साहब, आपने मेरे को बोला था उसके ऊपर आंख रखने के लिए, वो किसी और के ऊपर आंख रख रहा है. करेक्ट है नहीं है? देखो फनी एग्जांपल से क्या रहता है, कंटेंट परमानेंट हो जाता है. तो मैंने कहा देखो आपका बच्चा मतलब आते ही देखो हैदराबाद में अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ आए हुए, और आते मतलब आपकी बहू चुन ली उसने. अब मैं तो मिर्च मसाला लगाऊ ना, स्पाइसिंग ऑफ द थिंग्स.
तो उन्होंने बोले नहीं नहीं नहीं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सन, वो ऐसा नहीं कर सकता, आई नो माई सन। मैंने कहा अच्छा। मैंने हुडी डाली और ऐसे पॉकेट में हाथ डाले और ऐसा फोन रखा, समझ रहे हो? अब ये दोनों कॉफी पी रहे थे जिसके ऊपर हार्ट बना हुआ था, और इनकी कॉफी ऐसी थी, समझ? अब समझो, समझो बात को, कि उसका कप इसके मुंह में, इसका कप उसके मुंह। अब ये भाई बहन का रिश्ता है क्या, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? और ऊपर से मस्त ऐसा मैंने फोटो भी खींच लिया। अब जब मैंने फोटो भेजी तो पप्पा को क्या लगा, आप बताओ, डिड यू गेट द एविडेंस और नॉट? Moral of the story? Moral of the story, that never allow your uncle to know that you are in the same city. नहीं, moral of the story is you always need a what? Evidence. समझ में आ रहा है इसका मतलब? मतलब मैं क्लाइंट को अगर ये, अब तुम सोचिए, देखो, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर इफ आई एम गिविंग अ कमेंट कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नाइदर ट्रू नॉर फेयर, so is it a positive comment or negative comment? The whole management will be after me. The whole shareholders, lenders will be after me. Rohit, can you show us a evidence for the same? इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा एविडेंस क्या होना चाहिए। याद आ रहा है ये वर्ड? What is the word? Sufficient and appropriate audited. Sufficiency refers to and appropriateness refers to quality. If I will have the quality and quantity based evidence, then only I'll be able to support my opinion. आप हवा में तीर नहीं मार सकते। Just because you didn't like the face of the MD, you can't give a negative opinion. You have to have a which evidence? Concrete evidence. What do we call it as? Concrete evidence. इसीलिए तुम्हारे सारे सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स में से द लेंथीएस्ट, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज इज विच एविडेंस? ऑडिट एविडेंस सीरीज। 11 standards on auditing hai. How many? 11. Only talking about one word called what? Audit. Tell me the 6 principles now. IOI, वो तो मैंने बोला IOI, एग्जाम में IOI, IOI, SAAE, TCWG, AFRF, ROMM, ये लिख के आओगे क्या? फुल फॉर्म बोलो। सेकेंड, work performed by audit. Now last one is audit evidence. Now I collected so many audit evidences, 100, 200 sales invoice, 100, 200 purchase invoice, planning, strategy, MOA को copy, AOA को copy, certificate of incorporation, थोड़े से debtors, purchase, invoices, bundle of papers are there with me. Can I say that these many papers you will collect it? Yes or no? अब कलेक्ट करके उनको पॉकेट में डालूं या हाथ में रखूं या एक फाइल में असेंबल करूं? द नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? ऑडिट डॉक्यूमेंट. अब ध्यान से सुनो. द डे व्हेन योर ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, विद इन 60 days दिस फाइल शुड बी रेडी. दिस इज व्हाट द पीयर रिव्यूअर कम्स एंड चेक्स कि आर यू फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय आईसीएआई और नॉट. सर ये कहां पे लिखा हुआ है 60 days वाला पॉइंट? ये लिखा हुआ है SQC 1 में. किसमें लिखा हुआ है? व्हाट इज SQC 1? भूल गए? द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल बोलता है द मोमेंट योर ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड, ये जितने भी स्कैटर्ड पेपर्स है, सेल, परचेज, क्योंकि दे आर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ माई क्लाइंट. कैन आई से दैट? आर देयर कॉन्फिडेंशियल पेपर्स? आई हैव टू assemble them within how many days? 60 days, and put it in a proper audit working paper file. We call it as which file? Audit documentation file. And you need to preserve it for how many years? 7 years. ये भी कौन बोलता है? SQC 1 बोलता है. क्यों 7 years तक प्रिजर्व करना है? अब ध्यान से सुनना. हमने 5 years एक ऑडिटर को सर्व किया 18-19 में. Which year? 18-19 was the last year I served one of my client. अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 23-24. 23-24 में ही केम टू माय ऑफिस एंड कॉट माय कॉलर. ऐसा करके, ओए रोहित को ये वो ऐसा करके फालतू की बकवास कर. मैं ठंडा हो जा भाई, क्या प्रॉब्लम है? ओए रोहित, यू डिड द ऑडिट इन 18-19 एंड नाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज रेडिंग माय कंपनी. आई थिंक यू डिडंट डू द ऑडिट कॉम्पिटेंटली एंड इफेक्टिवली.
That's why they raided my office. मैंने कहा अच्छा, what is the problem? They are saying that I have paid the under liability and I'm unable to show them the tax challan. मैंने कहा wait. मैंने कहा which year you are talking about? 1890. Did I go to my cupboard? I opened. I preserve for how many years? मैंने कहा ईयर बताओ. 1819 खोला, ABC Limited खोला. मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? I think that you didn't check my tax challans. मैंने कहा ये रहे tax challans. Are you getting the point? और ये रहे आपके signature. You only took the Xerox and given it to me. अब बताओ, is this file act as a self-defensing tool against the charges of gross negligence which are put up by whom? Client. On whom? Auditor. That's why we need to preserve it for how many years? 7 years. तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे ऑफिस में जब दिवाली की पूजा होती है, मिनिमम नहीं तो 400-500 मतलब फाइल्स ऐसी निकलती हैं. रीजन बीइंग वेरी सिंपल, क्योंकि एवरी ईयर वन ऑडिट विल बिकम मोर देन ओल्डर देन 7 ईयर. 8th ईयर का तो हमें डिस्पोज, 8th ईयर पे भी यू कैन सेल, यू कैन डिस्पोज, रद्दी वाले को देना है, आग लगानी है, फूकना है, जो करना है करो, बट अप टू 7 years इट शुड बी लाइंग इन योर व्हाट ऑफिस. उसका बर्डन हमारे ऑफिस में रखा हुआ है. किसका बर्डन है? इसके अंदर मेरा एक भी पेपर नहीं है. किसका पेपर है? क्योंकि आई नो दैट इन फ्यूचर इफ समथिंग विल हैपन रॉन्ग, ही विल डेफिनेटली रन अप टू हुज ऑफिस? ऑडिटर. एंड कैच हुज कॉलर? ऑडिटर. एंड पुट ग्रॉस नेग्लिजेंस चार्जेस. तो दैट पॉइंट विल आई बी एबल टू डिफेंड माई सेल्फ? यस, दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रिजर्व. थर्ड पॉइंट, ये डॉक्यूमेंटेशन का ओनर कौन है? ऑडिटर. हु इज द ओनर? अब तुम्हें लग रहा होगा सर पेपर किसके हैं? क्लाइंट के. बट कलेक्ट किसने करे? ऑडिट. हु इज प्रिजर्विंग इन ऑफिस? ऑडिटर. हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी फॉर 7 years? तो दैट्स व्हाई हु इज एब्सोल्यूट ओनर? ऑडिटर. अब समझ में आ रहा है? All that is something which you need to know about what audit documentation. अब जल्दी से बताओ, assembling time क्या है? 60 days after signing the audit report. तो सपोज अगर मैं 15 जुलाई को ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देता हूं, तो भैया विद इन 2 months मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 days, बाय 15 September my file should be what? Assembled, which I need to preserve for how many years? 7 years. 8th year में can I dispose it? It's like the company maintaining the books of accounts for how many years? 8. Or if you are a practicing CMA, तो 10 years है. How many years? 10 years का. 100% clarity. So 7 principles are over. Now the 8th principle also you know, ICS and accounting system. What is the name? ICS का full form? Internal Control System. 2 simple questions. Don't complex it. Give me the simple answers. What if clients का internal control system is strongly installed? What about my workload? So if the ICS is strong, auditor's workload will be reduced. Can I say it vice versa again? If the ICS is what? Poor, auditor's workload will what? Increase. Imagine karo, you are going to a bank which has cameras but not working. Again repeating, a bank having 60 cameras but none of them is working, only hanging. So is it a sign of good ICS or poor ICS? Can you rely upon their internal control system? Or you cannot place any trust. Your workload got what? Increased. You have to be less careful or more careful. लेकिन when I went to Reliance का audit में, the internal control system is the world's best installed. अब बताओ, is your workload increased or decreased? Can I rely on them? Your workload will be reduced. Same is the case with the second system, accounting. Simple logic है, simple question, simple answer. Accounting system is manual and accounting system is automated, where your workload will be reduced. अगर automated है तो your workload is what? Reduced. और अगर manual है तो workload is what? कैसे? Manual में अब suppose my client has 7,000 debtor parties. How many? But I need those debtors who are pending for more than 180 days, who did not pay the money for more than. So same situation with this another client who is having automated accounting system, and I need the same information, where I will get it in a weeks and where I will get it in a seconds. Automated. आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी सॉफ्टवेयर में, all debtors pending for more than
1 डे, एंटर मारोगे पूरी लिस्ट फिल्टर होके आ जाएगी. इज इट करेक्ट और नॉट? बट मैनुअल में डू दे हैव टू चेक ईच एंड एवरी पार्टी और नॉट? तो वे योर वर्कलोड इज मोर मैनुअल एज कंपेयर टू वर्ड. तो याद रखना ये दो ऐसे पिलर्स हैं. और याद है हमने एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड में द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो वी डिड व्हाट? दिस ओनली. Always remember your targeted point is always the two systems of the client. What are the two systems? Internal control system. There are so many. Bookkeeping system भी है, financial information system भी है, management information system भी है. But major two core are what? Internal control system and accounting. अब आया the most important principle of yours that is called conclusions and reporting. याद आ रहा है? Same point. How many types of opinions you can give? 2 types or 4 types? How many types of reports you can give? 2 types. हम उन reports को बोलते हैं modified report, unmodified report. आज मैं तुम्हें explain करूंगा थोड़ा सा कि what do you mean by modified report and what do you mean by unmodified. What are the 4 types of opinion? Today I will tell you. First one is known as clean opinion. What is the first one? Second one is qualified. Third one is adverse, and fourth one is what? Disclaimer. Now it's time for you to understand the whole chart. Just the next 10 minutes, just listen and do not ask anything in between. After that, I will explain you everything, whatever is written. See, there are 2 types of report. One is called unmodified report and one is known as what? Modified. Unmodified report mein, there is only one opinion. We call it as clean opinion. What do we call it as? Whereas in the modified, there are 3 types of opinion. Tell me the remaining 3. Qualified opinion, adverse opinion and disclaimer of opinion. ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, बहुत सिंपल टॉपिक है. Before going there, I would like you to have an understanding of the audit report first. देखो, ये है अपनी रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट. Are you able to see? What is the heading you are able to see? Independent auditor क्यों बोला? This is internal auditor report or external? External. किसको एड्रेस कर रहे हैं हम लोग? तो हमारा मेन यूजर कौन है? Members of Reliance Industries Limited. Am I correct or not? यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? अब ये रिपोर्ट किसके ऊपर है? This is a report on when we did the audit of स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. स्टैंड अलोन मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, नॉट रिलायंस ग्रुप का. ग्रुप होता तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा होता. क्या लिखा होता? नाउ वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड. स्टैंड अलोन मतलब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट RIL की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की. अब इमीडिएटली नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? ओपिनियन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. अब ये पूरा पैराग्राफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है अदर देन दीज 2 वर्ड्स. ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना. रीड इट एवरीवन. इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द explanation given to us. Who explained and who gave us the information? Management. The aforesaid standalone financial statement give the information required under which act? Companies Act. In the manner so required and read the point please. Give a true and fair view. इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं. क्या ओपिनियन दे रहे हैं? क्लीन ओपिनियन दे रहे हैं. मतलब वी आर गिविंग अ विच रिपोर्ट. व्हाट इज दिस होल रिपोर्ट नाउ? देखो मैं तुम्हें कंपैरेटिव मोड में बताता हूं. अभी मैंने आपको क्या बोला कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आर देयर? 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. विच रिपोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट? अनमॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड में विच ओपिनियन? क्लीन मीन्स एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर. तो ये कौन सी रिपोर्ट हुई? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट. मतलब वी हैव नथिंग रॉन्ग टू से ऑन विच कंपनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इट मीन्स एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर. अब मैं तुम्हें इसी लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिखाता हूं. ध्यान से सुनो. मान लो रिलायंस में वी वर डूइंग द ऑडिट. ध्यान से सुनना. वी वर डूइंग द ऑडिट. We found out some minor problems. Which problems? Minor. So when I'm saying the minor problem, they're actually minor. Like say for example, they are not filing TDS returns on time. Right? Say for example, I found a cash fraud of 4 lakh rupees. कितने का? 4 lakh rupees. तो कैश में डिसबैलेंस हो रहा है कितना?
4 lakh rupees. Or say for example they did not pay their advance tax on time. I hope you know that we have to pay advance tax. सर ने करा दिया अभी तक एडवांस टैक्स या नहीं करवाया? इसकी 4 डेट्स होती हैं, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च, राइट? यू हैव टू पे योर टैक्सेस ऑन एडवांस, ठीक है? नाउ प्लीज टेल मी, am I saying that they are not filing the TDS returns or they are filing but late? Am I saying that they are not paying the advance tax or paying but late? और रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है? Yesterday I shown you the figures. Reliance is almost 17 lakh crores worth of company है. उसमें अगर ये 4 लाख रुपए का फ्रॉड है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 लाख रुपए के फ्रॉड के कारण, should I say that everything is untrue and unfair? Is it justified on my part or unjustified? क्योंकि I know that if I'll give a negative opinion, what will happen? स्टॉक मार्केट में क्या आ जाएगा? पैनिक अटैक. All the shares of the stock market will start what? Falling, because this is one of the elephant company of India. ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है इंडिया की. और 4 लाख का फ्रॉड अगेंस्ट 17 लाख करोड़ ऑफ कंपनी इज लुकिंग वेरी ह्यूज और नेग्लिजिबल. तो इस केस में ऑब्वियसली आई कांट गिव द विच ओपिनियन. क्लीन तो नहीं दे सकता. तो इन सच केसेस वी कैन गिव क्वालिफाइड ओपिनियन. तो क्वालिफाइड इज अ लिटिल बिट लोअर वर्जन ऑफ व्हाट? क्लीन. जहां पे थोड़े थोड़े माइनर इरेगुलरिटीज हैं, अनएथिकल लैप्सेस है, विच आर मैनेजेबल, विच आर व्हाट, बट दे आर नॉट क्रिएटिंग दैट मच ह्यूज इंपैक्ट ऑन यू. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ विच ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन. अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब मैं रिलायंस को ऑडिट कर रहा था, मेरे को यह पता चला कि रिलायंस ने 20,000 करोड़ का स्कैम किया है. कितना किया है? और मेरे पास उसका ये भी है. What I have? SAE. What is SAE? Is the amount now a very minimal amount or huge amount? Who should deserve to know? Lenders? उनको पता होना चाहिए. शेयर होल्डर्स पता होना चाहिए. गवर्नमेंट सबको पता होना चाहिए कि दिस कंपनी इज अ रिचुअस कंपनी और स्कैमस्टर. स्कैमस्टर. आपका सबका पैसा ये कंपनी डुबा रही है. अब बताओ, इज इट पॉजिटिव, इज इट क्वालिफाइड और कंप्लीटली नेगेटिव? In such case, I will give a which opinion? Adverse opinion. तीनों में डिफरेंस समझ में आया? तो when do you give clean? Everything is true and fair. You have anything negative or nothing negative? I'm not telling you exactly what I want to tell you, just for holding you so that you should know if I'll be using these words. इसके लिए अपना एक चैप्टर है, audit reporting. There I will tell you the exact meaning of these reports in an elaborate manner. Just for the timing I am telling you. Please tell me how qualified is different from clean. Minor irregularities. Which irregularities? Which I sorted out with the management and they promised me that next year it won't happen. Am I correct or not? थोड़े से unethical lapses है. What is the third one? Highly positive और highly negative. इसका मतलब मेरे को ये बताओ, यहां पे क्या वर्ड्स आएंगे फिर तुम्हारे? Everything is true and fair और do not give true and fair. ये वर्ड लिख देंगे अपन. अब समझ में आ रहा है? अब अच्छा लास्ट रिपोर्ट. What is the last one? डिस्क्लेमर. अब सुनो, डिस्क्लेमर क्या होता है? लिसन टू दिस वर्ड वेरी केयरफुली. इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं. व्हाट आर द टू वर्ड्स? डिस, आर यू क्लेमिंग इट और यू आर नॉट क्लेमिंग इट. इसका मतलब ये वो ओपिनियन है ऑन विच ऑडिटर इज अनएबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन. जैसे से फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड देम कि आई वुड लाइक टू विजिट योर गोडाउन टू चेक योर इन्वेंट्री, राइट? Godown is located in Odisha. Where it is located? Odisha. Can I travel and go there? But Odisha में अभी floods चल रहे हैं. क्या चल रहे हैं? Floods. Due to which the whole transportation, everything is affected and no one can reach to that state. Complete cut off from the remaining India. अब बताओ, possible or not possible? अब मैं क्या करूं? Did I get an evidence or I did not get an evidence? Am I able to express an opinion or unable to? We call it as which opinion? Disclaimer of opinion. Clear? Amma, stand up please. You. You only. Yeah. अरे not you अम्मा. तू अम्मा है. बैठ जा भाई मेरे. आप ग्रीन के पीछे. ओ तू अम्मा. अबे इतना पैनिक कर रहा है. आप ग्रीन के पीछे जो बैठे हैं. हाँ आप. हाँ जी. stand up. अच्छा बताओ, हमने
कौन सी रिपोर्ट्स और कौन से ओपिनियन एंड 9 प्रिंसिपल्स? टेल मी. Principle number 1. No one will speak up. Today I'll let you know what I am. The other side. Please tell. 9 principles please in sequence. तुम्हारी बारी भी आएगी, टेंशन मत लो. बोलो. చెప్పండి అమ్మా. 9 principles. Principle number 1. Get out. Take your book. Get out. What are you eating? Give the answer, sit down. Else throw yourself out. Do the honors. Laughing content. Thinking that no. अच्छा, तो क्या कर रहे थे आप क्लास में? पढ़ रहे थे? सुन रहे थे? Tell me what you heard and what you learned. तुम्हें क्या लगता है 200 के बीच में बैठ के I will never come to know that who is doing what? Tell me the 9 principles, else leave the class. You know 9 principles? You know or you don't know? Say yes or no. Then leave. Leave. Take your book. When I pick up someone, I know that whom I am picking. हाँ जी मैडम, आप भी खड़े हो जाओ. साइड. हाँ. Tell me the 9 principles. क्या? Disinterested in the class? बोलो. Disinterested or interested? आप बैठो, you leave. Go. Go, Amma. Are you feeling disrespectful right now? Yes or no? You are feeling disrespectful? That is how I feel. Tell me, Amma. Am I wrong in doing that now? Sorry? So why you are unable to answer it? If you didn't do wrong, which I am saying that you are doing. Why she was able to tell? चलो 4 ओपिनियंस बताओ. ये तो फ्रेश टॉपिक है, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ. Tell me the names of 4 opinions. Amma, her book is there in her hand. You tell her to leave, please. Leave. Don't. देखो, क्लास में कुछ भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं. अपन हंसी मजाक करते हैं ना. Do we do some jokes cracking in the class or not? Do we integrate the jokes into our subject also? बस 2 चीजें मत करना. Don't hurt my ego and don't hurt my attitude. And I told you yesterday, you should have, but you should know when to show it. Do you remember that? कल बोला था ना. बहुत पेरेंट्स के पास बहुत पैसे हैं, रिच हो, मेरे को अडॉप्ट कर लो. ज्यादा पैसे है तो क्यों नहीं कर रहे कॉन्सेंट्रेट? डिसइंटरेस्टेड हो, फिर बगैर ऑडिटिंग के क्लियर हो जाओगे. फिर या फेवरेट सब्जेक्ट की लिस्ट है, यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वहां पे नहीं करना. हु आर यू टू डिसाइड दिस? Will it be repeated? Definitely. Always watching. Peer review. समझ रहे? बैठो. देखो कुछ भी. आई एम नॉट सेइंग दैट. देखो आपकी एज ऐसी है. आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड. लंच का टाइम भी आ रहा है. Are you getting it? तुम्हारी एज भी ऐसी है, थोड़ी डाइसी सिचुएशन होती है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे में. Am I correct or not? लेकिन उन चीजों को कंट्रोल करो, कॉन्सेंट्रेट करो. दिस इज द ओनली एज व्हेन यू हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन योर नॉन अटेंटिवनेस एंड अटेंटिवनेस. Are you getting the point? आज अगर कॉन्सेंट्रेट कर लोगे, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं 60+ मार्क्स की. इट्स नॉट अ बैड डील.
irrespective of fact I'm not bothered about the other subject, but मेरे सब्जेक्ट में आपको 60 प्लस के मार्क्स दे दूंगा, and I'll make sure that you will not be requiring to revise it at your home, because I do revise it in the what class 5 to 10 times single topic and make you revise by speaking after me. Do I? तो फिर कौन इतना हार्डवर्क कर रहा है भाई? अगर मैं नॉर्मल यहां पे डिलीवर करके भी चले जाऊंगा ना, मेरे को पैसे पूरे ही मिलेंगे, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. This is not the only batch which is making my bread and butter. There are hundreds of things I am doing outside which is earning me more than what I am earning here. Reason is that we want results. मेरा track record नहीं खराब होना चाहिए. Maybe you might have seen that I am quite different from the others while delivering things and all. I deliver by my heart and soul. When I am into the subject, I am completely into the subject. Don't disrespect my subject. Don't disrespect me and my ego. जैसे ही उसके ऊपर आएगा तो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा के पास मैं भेज दूंगा. समझ रहे हो? ये हमेशा याद रखना. Off the class, even if you are going to put a hand on my shoulder, I don't mind, because we are nothing outside the class. Inside the class, you have to respect this feeling of faculty and student. इतना डेकोरम तो मेंटेन होना चाहिए. क्लैरिटी अम्मा? हाँ के ना? कौन बोला हाँ? उसके बिहार पे आप बोल रहे हो. चलो नेक्स्ट बारी आपकी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं. अच्छा जल्दी बताओ, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स? मॉडिफाइड एंड 4 टाइप्स ऑफ ओपिनियन. एडवर्स. अभी अभी मैंने आपको डिस्क्लेमर की ओपिनियन बताई. वाज आई एबल टू गो टू दैट प्लेस एंड चेक द इन्वेंट्री और अनेबल टू? तो आई गॉट विच ओपिनियन? डिस्क्लेमर. डिस्क्लेमर का मतलब आई एम एबल टू और अनेबल टू, क्योंकि समथिंग विच आई नॉट चेक्ड आई कांट एक्सप्रेस व्हाट opinion. Why should I express opinion saying that everything is true and fair? Did I go or did not go? This is the reason number 1 for disclaimers. Sometimes they do not allow you to go. ये तो नेचुरल रीजन आया कि फ्लड्स थे, आई वॉज नॉट एबल टू गो. समटाइम मैंने मैनेजमेंट को पूछा, आई वॉन्ट टू सी योर कैश रजिस्टर, कैन एनीबडी टेल मी व्हाई आई वॉज लुकिंग फॉर द कैश रजिस्टर? क्योंकि जब आप पीजीबीपी चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि एनी कैश पेमेंट और रिसिप्ट मोर देन व्हाट 10,000 is allowed or disallowed. That's what I wanted to check. Do I have a right? But they are saying that cash register will not give. Other than that, you ask anything. मैंने कहा मेरे को तो कैश रजिस्टर ही चाहिए. उन्होंने बोल रहे नहीं है. मैंने कहा ठीक है, अब बताओ मैं यहाँ पे क्या ओपिनियन दूं. यहां पे सिचुएशन में आके स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सर इज इट अ नेगेटिव ओपिनियन और इज इट अ डिस्क्लेमर ओपिनियन? इट इज अगेन अ व्हाट? डिस्क्लेमर. व्हाई? Evidence or no evidence? No evidence. Negative opinion called adverse opinion you only give when you have evidence in your pocket to support something. जैसे मैंने बोला कि 20,000 करोड़ का स्कैम था and I have what? SAAE. मेरे पास उसका एविडेंस है. अब बताओ, अब इसे डिस्क्लेमर दूं या एडवर्स दूं? इसका मतलब डिस्क्लेमर भी नेगेटिव है, एडवर्स भी नेगेटिव है. वन विद एविडेंस, one without evidence. 100% clarity. थोड़ा आइडिया आ गया? तो when I'll be speaking of these words called clean, qualified, adverse, disclaimer, I don't think so that it will look alien to you now. अब समझ. तो what are the 2 types of report? Modified and not. Unmodified report में कितनी clean opinions होती हैं? 1. What do we call it as? Clean. What is the second one? Modified. Modified में कितने होते हैं? 3. Qualified. क्योंकि ये तीनों थोड़े थोड़े क्या है? नेगेटिव हैं. क्वालिफाइड नेगेटिव नहीं है. क्वालिफाइड में भी ट्रू एंड फेयर वर्ड विल बी रिटन, बट सम माइनर इश्यूज व्हिच आई कांट इग्नोर, बट आई कांट गिव नेगेटिव आल्सो. दैट्स व्हाई कैन आई से दैट इट इज स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन whom and whom? एडवर्स और क्लीन के बीच में जो बैलेंस कर रही है वो कौन है? क्वालिफाइड. बट इट इज अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ क्लीन इज 100%, क्वालिफाइड इज 95%. Or you can say 99% also. Anything less than 100%, more than 95% is called what? Qualified. But completely negative. अब let's say for example, inventory valuation, AS2, cost or NRV? Cost is 180 crores, NRV is 15 crores only because this is a dead stock. अगर मैं इसे आज मार्केट में बेचूं तो 15 करोड़ ही रियलाइज होगा, लेकिन I spent 1 year back how much?
180 करोड़. अब बताओ कॉस्ट 180, NRV 15. What to be recorded? But company is recording. What is happening? Gross profit increasing, net profit increasing. Are they doing window dressing fraud? इसे विंडो ड्रेसिंग फ्रॉड बोलते हैं हम. अब बताओ, डू आई हैव एन एविडेंस? क्योंकि आई हैव द वैल्यूएशन रिपोर्ट कि दिस स्टॉक इज नॉट मोर देन वैल्यूड 15, बट हाउ मच दे आर सेलिंग, सॉरी हाउ मच दे आर पोस्टिंग. अब बताओ, मेरे पास एविडेंस है. आर दे डूइंग इट अकॉर्डिंगली और गोइंग अगेंस्ट इट? अब मैं डिस्क्लेमर दूं या एडवर्स दूं? एडवर्स. तो व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग नेगेटिव एंड यू हैव व्हाट, तो आप क्या बोलते हो? एडवर्स. एंड आपके पास एविडेंस नहीं है तो इसीलिए तो डिस्क्लेमर, आई एम अनएबल टू क्लेम, क्योंकि आई डोंट हैव एविडेंस, आई डोंट हैव एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्हाट ओपिनियन. 100% now. So that brings an end to your 9 basic principles governing audit. This was the last topic which we were left it in essay 200. तो our essay 200 is completely over along with chapter number 1. तो बताओ भाई, जल्दी से बता दो 9 principles. Second one, confidential. Stop. Under confidentiality, tell me the 5 cases now you can open up. Inspection, investigation, ethics, peer review. 100% clarity. Next one. Skills and competence क्या करना है? अपडेट रहना है, आउटडेट रहना है? Do we need to conduct seminars, trainings, and do we need to attend them or not? So that we can be updated in the market and we can able to sell our services. Next one क्या है? Sometimes we use the work of what? Staff. Sometimes we use the work of branch, internal auditor and expert. And sometimes, but that means that we can escape from expressing an opinion, or we still have to express an opinion. Expression, because we have to take the full blame if these people are not doing well. Next point, audit planning. AQCB stands for with knowledge you should enter or without knowledge. Otherwise, you will never be able to complete your audit on T basis. What is T basis? Timely, efficiently, effectively. You will go unplanned. You will never be able to complete your audit on time. Next point, audit evidence. Do we have to collect audit evidence on each and every inch of information? And audit evidence must be sufficient and appropriate. Quantity wise and next point is what? Audit documentation. All this, my planning, strategy, evidence, correspondence, documentations, communication taken place between auditor and manager. Are these the papers or not? Required to be assembled in a proper way. We call it as which file? Audit documentation file. Within how many days I have to assemble it? कौन बोल रहा है? SQC1. For how long I have to preserve them? कौन बोल रहा है? Who is the owner? It is my wish. Do I want to show it to somebody or not? Next one. What are the two systems? Internal control system and is workload, and these systems have direct relationship or inverse? Better the ICS and better the accounting system, lower will be your workload. तो कभी भी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले इन दोनों सिस्टम को टेस्ट करो. किसके ऊपर? क्लाइंट के ऊपर. अब समझ में आ रहा है? अब बताओ नेक्स्ट वन इज क्या है? Conclusions and reporting. What do you mean by 4 types of conclusion? Clean, qualified, and what are the types of reporting we have? Which one is positive? Have only one opinion? Which one is negative? Have 3 types of opinion. Qualified. Which one you are going to express when you don't have an evidence to express? When you have an evidence and the things are too much extensive in nature, things are minor irregularities you can talk, and nothing is that negative to talk about. 100%. Okay. Now the last topic which you are left, which is not there in this chapter, but I feel that you should know that. उसे हम लोग बोलते हैं essay 210. What is the number? और ये दोनों टॉपिक आई विल मेक यू रेड टुमारो. फर्स्ट लिसन, छोटा सा टॉपिक है, एंड टुमारो ऑल्सो फर्स्ट हाफ एन आवर विल apply on this topic, and tomorrow remaining half class में will start with our chapter number 2. क्योंकि I have a flow of that things. I was not expecting that कि उन्होंने chapter से निकाल के दूसरे chapter में enter कर दिया, but this is the right time when you should know about it, right? हम लोग इसको टॉपिक का नाम बोलते हैं agreeing to the
इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, पूरा नाम बोलो स्टैंडर्ड का। देखो सर, आई कैन गारंटी यू ये स्टैंडर्ड नंबर्स एंड स्टैंडर्ड नेम्स आप मरते दम तक नहीं बोलोगे, एंड दैट टू सीक्वेंस में याद करवाऊंगा। इन विच मैनर? जल्दी से 200 का नाम बताओ क्या था। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट एंड कंडक्टिंग द ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। डिड वी लर्न एवरीथिंग अबाउट इट? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टैंडर्ड? ध्यान से पढ़ो, स्टैंडर्ड का नाम क्या है? अग्रीइंग। हु इज अग्रीइंग? टू पार्टीज। Who are the two parties? Auditor agreeing to what? Initial audit engagement term. It means this standard is going to teach you that कि boss prevention is better than cure. सुनो, हम लोगों को एक मिथ है, we have a myth that कि every audit starts with appointment letter. What is a myth we have? Appointment letter. No, appointment letter is the stage 2. Every audit starts with audit engagement letter. Which letter? अच्छा बताओ, appointment letter who sends to whom? Company sends to whom? ये तो तभी सेंड होगी ना जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा। बट अपॉइंटमेंट होने से पहले one party should agree or both parties should agree? Management is ready to appoint me. There is no problem in that. But I should also agree before giving my acceptance. अब ध्यान से सुनना, जो मैं तुम्हें लॉजिकल चीजें बताऊंगा। टिल 2015 माई फर्म नेवर एवर डिड लिस्टेड कंपनी ऑडिट। विच कंपनी? 2016 में जैसे डिमोनेटाइजेशन आया, दैट इज द टाइम व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट लिस्टेड टाइम है। मतलब मेरे प्रैक्टिस के करियर में इट वाज ऑलमोस्ट 4 years आई वाज इनटू प्रैक्टिसिंग। द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी का ऑडिट आई डिड इट इन दैट टाइम। यू वोंट बिलीव, माई आत्मा एक्चुअली मेट विद होम परमा, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस किसका था? अनलिस्टेड, पब्लिक का, प्राइवेट का, ट्रस्ट सोसाइटी सब करे हुए थे, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी। बट द फर्स्ट टाइम आई वाज एक्साइटेड एज वेल, क्योंकि सेबी का ऑडिट करना है। किसका करना है? सेबी कंप्लायंसेस का ऑडिट करना है। तो देयर आर, यू वोंट बिलीव, कंपनी ऑडिट एंड लिस्टेड कंपनी का ऑडिट इज लाइक दिस। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द टू। प्रॉब्लम व्हाट हैपेंड? माय टीम वाज नॉट सफिशिएंट। Who was not sufficient? Team. Knowledge was not sufficient. Competency was not sufficient. Capabilities were not sufficient. That's why I could not say yes to that audit in 2015. Then I did 1 year of hard work on myself. I arranged a team, made a better team. Then we are able to say what? Yes, kabhi bhi yaad rakhna, audit will come on to your way. But when you have to say yes or no, when you ask yourself first, are you CNC, competent and capable? What is the CNC? Competent and capable. अगर आपको आता है yes, मेरे पास अच्छी टीम है and I am competent, then only you should say yes, because withdrawal is not allowed. What is not allowed? Withdrawal. सर रेजिग्नेशन तो हमने सुना है अलाउड है। रेजिग्नेशन पे आपको रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन देने पड़ोगे, और क्या रीजन दोगे? I'm ineligible, I'm incompetent, I'm not capable. Will it be a completely spread in the whole market or not? No one will be interested in taking you or picking you up as a auditor. So it means prevention is better than cure. पहले अपने देखो, ऑडिट आज नहीं तो कल आ ही जाएगा सर। If you are good ना, you are a magnet in the market. Companies will get attracted to you. आइए, तुम्हें कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है। Yesterday also we were talking about, do we advertise ourselves? No. People automatically come to know about us. Reason being very simple, because we serve ethically and we serve genuinely. Am I correct or not? 15 में I said no. 16 में I said yes, because that 1 year I did the work on it. Since then, with God's grace, touch wood, I have more than 15 clients now. समझ में आ रहा? अब ये कैसे पॉसिबल होता है? हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स जस्ट दैट यू नीड टू कीप ऑन पॉलिशिंग योर, मैंने बोला ना अभी आपको, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। योर एक्चुअल जर्नी स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड, रियलिटी में आई एम टेलिंग यू। आर यू गेटिंग? नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब मी एंड मैनेजमेंट ने तो मेरे को एक मेल भेजा कि रोहित, वी आर प्रपोजिंग यू एज अ auditor to be our auditor for this financial year to 6th financial year for the period of 5 years. But I have to question myself, am I capable or not? Okay, say for example, I
I am saying that I am capable and competent. Now there comes a need of this letter. This letter is sent by whom? Auditor to the whom? Manager. और एक और वर्ड आज आप सीखोगे, उसे हम लोग बोलते हैं TCWG. What do we call it as? Those charged with governance. What do we call it as? Those charged with governance. ये बेसिकली होती है ऑडिट कमेटी ऑफ द कंपनी. विच कमेटी? हर कंपनी में एक कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी. तो वी विल मेक दिस लेटर के 2 कॉपीज एंड विल सेंड इट टू होम? मैनेजमेंट एंड TCWG को. अब ये कॉपी सेंड कौन कर रहा है? ऑडिटर टू द होम? क्लाइंट. डिफाइनिंग माई टर्म्स एंड कंडीशन. बॉस, दिस इज माई स्कोप, this is my role, this is my responsibility, and this is my objective. I don't want anybody's word interference. याद आ रहा है स्कोप में मैंने एक लेटर लिखवाया था आपको. पॉइंट नंबर 1 में you will send audit engagement letter. ये है starting first communication which takes place between the auditor and management. Later on, if the management will say agree to me, Rohit, we are okay with your terms and conditions, then management will send me the which letter? Appointment letter. So appointment letter is the starting point or not a starting point? अब पढ़ो name of standard. Agreeing to the initial audit engagement, not post audit. Initial audit start करने से पहले agree करना जरूरी है by the 2 parties between auditor and management. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम लोग ये क्या लिख के भेज रहे हैं? स्कोप तो बताइए आपको. माई बाउंड्रीज, कि what I will do, what I will not do, these are my boundaries, this is my Lakshman Rekha, I will not cross. What is the second point? Role. Is my role internal audit or external audit? External audit. What is the next point? My responsibility is to give you the guarantee or to express an opinion. सर ये तो obvious ही है, उसको obvious नहीं है. He might be thinking कि I'm paying to Rohit Grover, he might be giving me a guarantee. Who is not clear? Management. Who has to make them clear? Auditor. कि boss, I'm not here coming for what? Guarantee. I'm coming here only for what? Opinion. That is what my responsibility. And what is my objective? What are my objective? Primary. Second. My focus is only on FS. FS का AFRF check करना, याद आ रहे हैं? FS must be prepared as per accounting standard. FS must be free from risk of material misstatement. FS के ऊपर report करना. If time will allow, I'll detect some frauds and errors. I will check your internal control system का adequacy and I will check your GC assumption. अब समझ में आ रहा है? Is it better that you should clear in the beginning or not? Advantage, I don't want any kind of misunderstandings at the which stage? Later stage. मैं नहीं चाहता बाद में आके अपन एक दूसरे के बाल पकड़े, हाँ तू ये नहीं बताया, तू ये नहीं बताया. Do I want that? Or I don't want? इसलिए पहले अपना काम खत्म करो. Who is sending? To whom? तो अगर मैं तुमसे डेफिनेशन पूछूं, what is the meaning of audit engagement letter? अब बताओ. Audit engagement letter is drafted by auditor on his letterhead, directed and forwarded to whom? Management and TCWG, defining his terms and conditions in the form of scope, role, responsibility. अच्छा, इसमें बहुत सारी और चीजें होते हैं, हम लोग बताते हैं. जैसे I will also tell them कि sir, I may use your staff. I may use your staff because who is working with you? Your staff only, ना? तो if I need sale purchase का information, I may ask you to send me your staff or give me this information. Everything clear cut, word to word. You should express your thoughts in this letter. If they send this letter to you with a stamp of the company, sign and acknowledgement, then it is assumed that कि yes, they accepted your terms and condition. तो यहाँ पे 2 parties involved है. Who? Auditor and management. समझ में आ गया? ठीक है, रिमेनिंग अपन कल करेंगे. I just wanted to give you the introduction of this topic so that tomorrow the half an hour we can spend it on this particular topic, right? चलो, see you guys tomorrow. Thank you.